Greetings to all of you. Today I am presenting myself on a topic which is needed to be explored on scientific grounds with a deep understanding. Me, Dr. Divya Jyoti, and MSc Physics, Gold Medalist, PhD with patents, and I am JRF from CSIR, JRF from Albert Einstein Institute, Germany, and JRF offered by Department of Atomic Energy, India. आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे कि जब भगवान हर जगह है तो हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाकर उसे क्यों ढूंढते हैं? Why should one visit to religious places when God is everywhere? मैं आज आपको इसके साइंटिफिक रीजंस बताऊंगी कि जब गॉड हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर है, हम हर जगह, बिकॉज गॉड इज एनर्जी अकॉर्डिंग टू साइंस, और जब वो एनर्जी हमारे अंदर है, हम उसको फील कर सकते हैं, तो हमें ऐसे रिलीजियस प्लेसेस पर जाने की जरूरत क्या है? व्हाट साइंस इज लाइंग बिहाइंड इट? लेट अस डिस्कस इट इन डीप डिटेल. India is the country which is known for its rich Hindu culture and tradition. There are hundreds of mesmerizing Hindu temples, gurdwaras, churches and mosques across the country in different designs, shape, locations. But not all these buildings are built as described in the Vedic literature. Paying visit to these places are not only to get blessing, but to get a calm and better mindset. There are scientific reasons which explain the actual purpose of visiting these holy places according to the Vedas script. हमारे भारत के वेद शास्त्र में, वेदों में ये लिखा है कि एक मंदिर को, एक रिलीजियस प्लेस को किस जगह पर, किस शेप में और किस आर्किटेक्चरल डिजाइन में उसको ढालना चाहिए, ताकि वहां पर पहुंचने वाले इंसान को सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ना मिले, वो एक शांति का एहसास करे और उसका ब्रेन काम और रिलैक्स्ड हो सके. हम शांति ढूंढने के लिए ही टेम्पल्स में, गुरुद्वाराज में, चर्चेज में और मस्जिद के अंदर जाते हैं. वो शांति का एहसास तभी होगा जब आर्किटेक्चरल डिजाइन एक अकॉर्डिंग टू द वैदिक लिटरेचर होगा, अकॉर्डिंग टू द वेदास स्क्रिप्ट होगा. Let us talk about the location and the architecture of these religious places. Agam Shastra explains that a temple must be built on the nomes mentioned in it. Otherwise, both the temple and its surroundings will disappear in time, and the traces even can't be found. Remember, once a temple is built, you cannot destroy it until it gets itself destroyed or ruined by nature. But it is the man's duty to protect a temple like a crown on a king, and a temple is therefore an area, a town, a village, a city. A temple is an ultimate embodiment of source of energy, and by the word energy, I mean that energy which is cosmic and will make you help yourself in controlling your senses, which might help you remain energetic or patient at diversified situations of your life. In a temple, not just you give energy from your body, and even your body gains energy from the deity itself. Temples, mosques, gurdwaras, churches are found deliberately at a place where the positive energy is available abundantly from the magnetic and electric wave conveyances of north and south poles. The idol of God is set in the core center of the temple, known as Garbhagriha or Moolasthanam. Ideally, the structure of temple is built after the idol has been placed in a high positive wave centric place. This Moolasthanam is the place where Earth's magnetic waves are discovered to be the most extreme. आपको समझ आ गया होगा, अगम शास्त्र है जो ये एक्सप्लेन करता है कि जिसके अंदर रूल्स बनाए गए हैं कि कहाँ पर इन रिलीजियस प्लेसेस को बनाया जाए. और जितने भी फेमस और पुराने रिलीजियस प्लेसेस हैं, यू विल फाउंड कि वो ऐसी जगहों पर बने हुए हैं विच आर काम एंड विच आर अवे फ्रॉम द नॉइसेस.
और क्योंकि ये जो प्लेसेस हैं यहाँ पर एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स प्रेजेंट होता है। और अगर मैं एनर्जी की बात करती हूँ, आई टॉक अबाउट कॉस्मिक एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर आती है, द हायर मोस्ट फ्रीक्वेंसी, द टॉप मोस्ट फ्रीक्वेंसी बैंड। और अगर वो एनर्जी ग्रास्प होती है, वी फील द मोस्ट एनर्जेटिक, और वो एनर्जी हमें अपनी जिंदगी की वेरियस सिचुएशंस में जब हम लो फील कर रहे होते हैं वहां पर हमारी हेल्प करने की कोशिश करती है, वहां हमारी हेल्प करती है। एंड ऐसा नहीं होता कि आप वहां पर जाकर सिर्फ एनर्जी रिसीव करते हैं, यू गिव योर एनर्जी टू द सराउंडिंग्स ऑल्सो एट दीज प्लेसेस। और ये ऐसे प्लेसेस ज़्यादातर ऐसी लोकेशंस पर आपको मिलेंगे जहां पर अर्थ की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी भी प्रेजेंट होगी, वहां पर मैग्नेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट होगी, और जहां पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी वहां पर डीटी की प्रेजेंस होती है, जिसको मंदिरों में गर्भगृह या मूल स्थानम कहा जाता है। तो वहां पर डीटी की जो हम कहते हैं कि एक जेस्चर है, उसको वहां पर इंस्टॉल किया जाता है, so that maximum energy is located around there. And the materials or rocks which are used to construct such religious buildings have the capability to capture and reflect the sound waves the most, and they must be chosen to construct such buildings, and civil engineers only knows this. That's why once you enter any famous religious place, you will observe silence and peace around you. And the most fascinating thing is we feel cool, and the temperature in that place is always less than the atmospheric temperature. The structure of Gopuram in the temples is the most intricate one to see and must be chosen wise and built aerodynamically. Well, ancient sculptors were so good at making beautiful arts, then why they refused to make such same exquisite art on the Gopuram? Why they show only their skill of various poses of men and women in the interior of the temple? Why not on these Gopuras? Well, some do, but most don't. It is because the light and the sound waves are so traversed around them that they don't make any kind of harm to the statue of the residing deity under that Gopura. Deity must be protected from all the 5 elements of nature and must always be guarded with care. As you know, when you enter the garbhagriha of a temple, which only the temple priests are restricted to do and not others, you feel an increase in your body temperature. This is because the energy is being trapped in the deity, and also it is the center of gravity of that temple. Existence of ponds inside temples, gurdwaras, signifies the sacred nature of water and removing dirt. Just like water removes dirt, and when you put yourself in that pond, when you put your body inside that pond, it is the significance that you are removing dirt, slug from your body, from your mind, and gaining and receiving the positive vibes inside you. The shape of Hindu temple head as well as church is aerodynamic. The aerodynamic shape structure of temple head and conical upper head in church attracts the positive charges from clouds. This positive energy covers the whole internal surroundings of temples, which provide positive thinking, mind peace and health. Sitting some time in such places after worshipping God and goddesses gives you the solution to your life problems. The aerodynamic shape also reduces the natural disasters like earthquake. According to the science, the earthquake waves generate the vibrations beneath surface of earth. This earthquake vibration, when reaches the aerodynamically shaped structure, it rotates the vibrations on the boundary of the aerodynamic structure. According to the aerodynamic science, aerodynamic structure reduces the earth vibration losses. It must be clear to you कि जो लोकेशन है, आर्किटेक्चर है टेम्पल्स, चर्चेस, गुरुद्वारास का, वो इस तरीके का होता है, उनकी कंस्ट्रक्शन, उनके मटेरियल्स, उनमें जो पत्थर यूज़ किया जाता है वो इस तरीके का होता है कि यू फील इनसाइड टेम्परेचर लेसर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर अंदर का कम होता है, आप वहाँ पर जाकर
कूल जो फीलिंग होती है उसका एहसास करते हैं, आपको शांति मिलती है। एंड अनदर थिंग इज कि मंदिरों में जहाँ पर डीटी को इंस्टॉल किया जाता है, इफ़ यू रीच टू दैट प्लेस जहाँ पर नॉर्मली एक कॉमन मैन को जाना अलाउड नहीं होता, इफ़ यू गेट अ चांस टू गो देयर यू विल फील एन इंक्रीज इन योर बॉडी टेम्परेचर। आपको लगेगा कि वहाँ पर जाकर आपका थोड़ा बॉडी टेम्परेचर गर्म हो गया है, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है, बिकॉज वहाँ पर एनर्जी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। एंड दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑल्सो। और बहुत सारे मंदिरों में, गुरुद्वारों में तालाब होते हैं जो वाटर की जो पॉयस नेचर है, सैक्रेड नेचर है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट लाइक जैसे वाटर शरीर से या कपड़ों से या चीज़ों से गंदगी को हटाता है, उसी चीज़ की सिग्निफिकेंस होती है कि जब हम उतरते हैं उस तालाब में या अपना हैंड वॉश, फेस वॉश, कुछ भी आप करते हैं, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप अपने ब्रेन की, आप अपनी बॉडी की डर्ट, गंदगी, नेगेटिव एनर्जी वहाँ रिमूव कर रहे हैं एंड यू आर गेनिंग द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम देयर। और जो शेप की अगर मैं बात करूं, जैसे चर्चेज हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं, उनकी शेप एरोडायनेमिक कोनिकल शेप होती है ऊपर से। एक फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट है कोरोना डिस्चार्ज, कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टेक्स प्लेस रैपिडली एट द शार्प एजेस। तो वो जो कोनिकल शेप है दैट अट्रैक्ट्स पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द क्लाउड्स, और वो पॉजिटिव एनर्जी वो पूरी की पूरी सराउंडिंग, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग को कवर कर लेती है। और वही पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग, पीस ऑफ माइंड, इन सब का एहसास कराती है। और अगर वहाँ पर हम कुछ देर बैठ जाते हैं, वी फील एक्सट्रीम कामनेस इन आवर ब्रेन। एंड मोर ओवर अगर मैं बात करूँ सस्टेनेबिलिटी की, तो ये एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर, ये कॉनिकल स्ट्रक्चर अर्थक्वेक से भी बचाती है, क्योंकि जो अर्थक्वेक के टाइम जो सीस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं, जो वाइब्रेशंस अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ जनरेट होती हैं, दोज आर स्प्रेड और स्कैटर्ड बाय दिस एरोडायनेमिक शेप। And as much as I talk about gurdwaras and mosques जहाँ पर dome like structure होती है, what is the purpose of this dome? One of the most well-known features in such architectures is the dome. They are stronger, lighter, quicker to build than traditional buildings and are an efficient architectural design. A large amount of space is enclosed with minimum materials, labor and energy. Instead, their curved shape allows wind to pass smoothly over their surface, creating minimal pressure or turbulence. जब एयर में turbulence नहीं होगी and वहाँ पर disturbance नहीं होगी, we will feel cool, calm and peace. Domes can have good acoustic qualities, making them a popular choice for building where it is necessary for sound to travel over larger distances such as public arena. ये structures scatter करती हैं sound को, waves को उस पूरी की पूरी building के अंदर। इसीलिए आप गुरुद्वारा में या मॉस्क में, ये मस्जिद के अंदर कहीं पे भी, किसी भी लोकेशन पे आप बैठे हो, you feel calmness. And these domes are curved structures. They do not have any angles, no corners. They enclose an enormous amount of space without the help of a single column. Despite their thinness, domes are one of the strongest and stiffest structures in existence today. Early Christian basilicas and ancient Roman temples often had one huge dome in the shape of hemisphere. If a church used to have 3 domes, they symbolize the Holy Trinity. 5 domes symbolize Christ and the 4 evangelists, while 13 domes are usually dedicated to the Christ and the apostles. The same principles keep domes up. Air pressure is strong and so are the domes. Just like a tire, the air pressure in a dome keeps the walls up. Just like excess pressure inside a soap bubble keeps it stable. Instead of a car, a dome folds up against air, pushing back down on it and the force of gravity. The circle represented perfection, eternity and the heavens. The square represented the earth. स्क्वायर के ऊपर, स्क्वायर स्ट्रक्चर के ऊपर डोम को इस्टेब्लिश किया जाता है।
and because air pressure is very strong and domes are also strong and physics के students को पता होगा कि जो soap bubble है या air drop है, it doesn't collapse because of air pressure, वो crush नहीं हो जाती है because उसके अंदर का pressure बहुत excess होता है जो उसको स्टेबली एग्जिस्ट करने में हेल्प करता है. एंड जस्ट लाइक द डोम्स टू, डोम्स के अंदर भी वही प्रिंसिपल फॉलो किया गया है. And when we go to such religious places, we remove our footwears. Religious places are the places that contain pure vibrations of magnetic and electric fields with positive energy. In olden days, temples and other religious places were built in such a way that the floor at the center of the temple were good conductors of these positive vibrations, allowing them to pass through our feet to the body. Hence, it is necessary to walk barefooted while you enter the core center of such a religious place. Another non-reason is shoes and chappals are used everywhere. Hence, they tend to get all the impurities like dirt, germs, etc. We spoil the pure environment of such a religious place and is the source of negative energy. And when we bow down in front of the deity, it creates a sense of being humble. जब हम अपने जूते चप्पल उतार कर ऐसे रिलीजियस प्लेस के अंदर एंटर करते हैं तो जितनी भी उस जगह की वाइब्रेशंस है, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो थ्रू आवर फीट हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है. एंड और उस टाइम पे, पुराने टाइम पे जो ऐसी स्ट्रक्चर्स थी, जो ऐसी मॉर्फोलॉजीज थी, उनका जो फर्श था वो ऐसे मटेरियल का बना होता था ताकि वो गुड कंडक्टर हो और वहां से हमारी बॉडी के अंदर वो एनर्जी ट्रांसमिट इजीली हो सके. और दूसरा रीजन ये है कि हम बाहर की गंदगी, जाम्स वहीं पर छोड़ आते हैं एंड वहां से उस प्योर एनवायरनमेंट जो है उस रिलीजियस प्लेस का, वहां की पॉजिटिव एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ग्रैस्प करके वहां से बाहर ले आते हैं. और जब हम अपना सिर झुकाते हैं डीटी के सामने, गॉड के सामने, तो वो शो करता है हमारे अंदर एक हम्बल वैल्यू को इनकलकेट करना. And moreover, the rituals which are found inside temples activate our five senses, and five senses of human body are sight, देखना, hearing, सुनना, touch, जिसको मैं कहूँ कि स्पर्श, and taste, आप किसी चीज का स्वीट, सॉर, बिटर टेस्ट कर पा रहे हैं, and smell. These are activated by the following actions in the temple. The positive energy in the temple is absorbed properly only if you ensure that all the five senses are activated in your body while you are in the temple. Also, the place of worship is said to be pleased only if your five senses are pleased. मंदिरों के अंदर जाने का और वहां पर जाकर रिचुअल्स परफॉर्म करने का जो साइंटिफिक रीजन है, दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ योर फाइव सेंसेस. और हमारी पांचों सेंसेस, अगर पांचों ज्ञानेंद्रियां अगर ढंग से काम करती रहेंगी तो हम एफिशिएंटली हमारा ब्रेन काम करता रहेगा. सो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट सेंस विच इज हियरिंग सेंस, सुनना. जब हम मंदिर में जाकर घंटा बजाते हैं तो वो हमारी हियरिंग सेंस को एक्टिवेट करता है. पीपल हु आर विजिटिंग टेम्पल शुड एंड विल रिंग द बेल बिफोर एंटरिंग द इनर टेम्पल वेयर द मेन आइडॉल इज प्लेस्ड. These bells are made in such a way that they produce a sound. It creates a unity in the left and right parts of our brains. The moment we ring the bell, it produces a sharp and enduring sound which lasts for minimum of 7 seconds in echo mode. The duration of echo is good enough to activate all the 7 healing centers in our body. This results in emptying our brain from all negative thoughts. This bell sound is also absorbed by the idol and vibrated in the गर्भगुडी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जब हम जाकर वहां पर बेल बजाते हैं, घंटा बजाते हैं, और वो घंटा ऐसे मटेरियल का बना होता है कि उसकी आवाज हमारे कानों के अंदर कम से कम 7 सेकंड तक गूंजती रहे. और ये 7 सेकंड एनफ है, सफिशिएंट है, काफी है आपकी बॉडी के 7 एनर्जी चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए. एंड व्हाट आर दीज एनर्जी चक्रास, ये मैं किसी अगले लेक्चर के अंदर, अगली डिस्कशन में डेफिनेटली लेकर आऊंगी.
Let us talk about our next sense, which is the sight sense, which can be activated by lighting camphor in front of idol. जब ज्योत जलाई जाती है, चाहे मंदिर में चाहे गुरुद्वारा में, the inner core is usually dark where the idol is placed. You usually close your eyes to pray, and when you open up your eyes, you should see the camphor. You should see that jyot which was lit to do the aarti in front of the idol. This light seen inside dark activates your sight sense. The other reason of lighting camphor is for the idol to absorb the heat and vibrate within the gargudi for certain period. जब आप आंखें बंद करके वहां पर पूजा करते हैं, एंड व्हेन यू सडनली ओपन अप योर आईज, आपको ये कहा जाता है कि जैसे ही आप आंख ओपन करें, आप अपनी आंखों को खोलें, आपकी नजर सामने जलती हुई ज्योत पर होनी चाहिए, क्योंकि एकदम से आप इतनी ब्राइट लाइट देखेंगे तो साइंस स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि उनका जो कोर्निया होता है दैट ट्राइज टू एक्सपैंड, और ये जो हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की एक्सरसाइज हमारी कोर्निया मसल्स को करवाते हैं, इससे हमारी साइट सेंस एक्टिवेट होती है. And coming on to the touch sense, which is activated when we put our hands over the camphor flames and touch our eyes with it. Once the camphor is brought to you after offering the prayer, you usually put your hands over the camphor to make your hands warm, and then you touch your eyes with your warm hands. This action assures your touch sense is active. आप जब ज्योत हमारे सामने आती है, हम उसके ऊपर से अपने हाथों को लाकर उस हीट को, जब वो थोड़े से गर्म हो जाते हैं, हम अपनी आंखों के साथ टच करवाते हैं. सो इन दिस वे आवर टच सेंस बिकम्स एक्टिवेटेड. Coming on to the smell sense, which can be activated by offering flowers to the god at the temple or any religious place. Flower is good to see, spreads good fragrance, very soft to touch. The nectar given by flower pleases the tongue, and this combination is perfect for using at holy places. Only specific flowers are used for offering to God, like rose petals, jasmine, marigold, based on different factors. Amongst them, fragrance is the most important. The fragrance of the flower, the camphor, and the incense sticks all together have the strong essence to keep your smell sense active and pleasant, giving calmness to your mind. जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं, आप गुरुद्वारे में जाते हैं, आप मस्जिद में जाते हैं, आप चर्च में जाते हैं, वहाँ जाकर कैंडल्स, धूप बत्ती, अगरबत्ती जो जलाई जाती है, फ्लावर्स ऑफर किए जाते हैं, तो उनकी जो एक प्लेजेंट फ्रेग्रेंस होती है, जो खुशबू होती है, वहाँ पर चारों तरफ फैल जाती है, और उस खुशबू को जब हमारे नाक के अंदर से हमारे ब्रेन तक पहुँचाया जाता है तो हमारी स्मेल सेंस एक्टिव होती है. और जो फ्लावर्स चूज किए गए हैं, जो वाकई वेदास के अंदर कहे गए हैं, वो ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके अंदर फ्रेग्रेंस बड़ी स्ट्रांग हो, जस्ट लाइक रोज पेटल्स, जैस्मिन्स, मैरीगोल्ड एटसेट्रा. बड़ी मैं कहूँ कि इनकी शार्प स्मेल जो है वो होती है. And next we are going to discuss the sense of taste. Drinking तीर्थम, जब चरणामृत पिया जाता है या प्रसाद ग्रहण किया जाता है मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिद में. So this is your next part. Your act would be to drink तीर्थम, to eat prasad, to आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, and it is generally ideally from a silver or copper vessel. The water used for tirtham usually would contain tulsi leaves dipped in water and must be stored at least for 8 hours in the copper vessel. According to Ayurveda, water stored in copper vessel has the ability to balance all the 3 doshas in your body. आयुर्वेद में कहा गया है कि वात, कफ और पित्त, अगर ये दोष हमारी बॉडी से निकाल दिए जाएं तो एक ह्यूमन बॉडी को हेल्दी हमेशा रखा जा सकता है. एंड साइंस इस बात को मानती है कि अगर आप एक कॉपर के बर्तन में, एक तांबे के बर्तन में पानी को आप कम से कम 8 घंटे के लिए स्टोर करके रखते हैं तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज आ जाती हैं कि वो आपकी बॉडी से इन दोषों को बाहर निकाल देता है, बिकॉज इट चार्जेस द वाटर पॉजिटिवली, एंड बाय ड्रिंकिंग सच वाटर विल एक्टिवेट योर टेस्ट सेंस ऑल्सो. Other benefits of drinking tulsi water from a copper or silver vessel also include cure for sore throats,
fever and common cough, cold, respiratory disorders, formation of kidney stones, heart disorder chances will also be reduced. Moreover, sometimes Charnamrit contains curd, milk and content of glucose in it, and these quantities will balance the amount of nutrients required by your body. Coming on to पूजा करने के बाद हम अपने डीटी, अपने जो मैं कहूँ कि हमारे जो कुल देवता होते हैं उनके चारों तरफ हम चक्कर लगाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर. Finally, after performing all the rituals, you have to walk around the idol inside the garbhagriha, the innermost chamber of temple or gurudwara or मैं कहूँ कि mosque, in clockwise direction, and it is mentioned in Vedas that it should be 9 times at least. This is called pradakshina, and pradakshina literally means right side in Sanskrit, कि आपको राइट साइड की तरफ घूमना होता है. जो आइडोल होते हैं गर्भगृह के अंदर, दैट एब्जॉर्ब्स ऑल द एनर्जी फ्रॉम बेल साउंड, फ्रॉम कैंपर हीट एंड द कॉपर प्लेट बीनीथ them when they are constructed, क्योंकि उनके नीचे एक कॉपर प्लेट buried up की जाती है and vibrates the positive energy within the garbhagriha for a certain duration of time. And when you do pradakshina at this point of time, you tend to absorb all these positive vibrations. Once your 5 senses are activated, this vibration inside garbhagriha is considerably less, and hence it is advised to visit the temple very often and follow the same rituals again. क्योंकि जो ड्यूरेशन होती है इन वाइब्रेशंस की वो बहुत कम होती है, इसीलिए आपको बार बार उस जगह पर जाने को कहा जाता है, ताकि एवरी टाइम आप उस एनर्जी को गेन करते जाएं और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी एहसास भरते जाएं. अब मैं आपको सिग्निफिकेंस बताना चाहूंगी कि जो तिलक या कुमकुम हमारे ट्रेडिशन में मस्तक पर लगाया जाता है, व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट. On the forehead between the 2 eyebrows is a spot that is considered as a major nerve point in human body since ancient times. The tilak is believed to prevent the loss of energy. The red kumkum between the eyebrows is said to retain energy in human body and control the various levels of concentration. While applying kumkum, the points on the mid-brow region and adanya chakra are automatically pressed. This also facilitates the blood supply to the face muscles, and moreover, kumkum contains mercuric sulfide that reduces stress and fatigue. So ये scientific reasons हैं तिलक लगाने के, कि वहाँ पर जो pressure point है आप उसको दबाते हैं, एक acupressure sort of activity है, and वहाँ से energy बाहर ना निकल पाए आपने उसको रोका है. मोर ओवर मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है कुमकुम में, जो कि स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है जब उस मैं कहूँ कि अदन्य चक्र को दबाया जाता है. The tilak is an excellent solution to balance the temperature in our body also. जब हम चंदन का तिलक लगाते हैं, it gives us the feel of calmness, cool जो होता है उसका हमें एहसास कराता है. This also balances the variance of minerals in our body that could lead to cough and cold. Wear a pinch of pulse on your crown and the joints of your body, and you can keep a lot many diseases at the bay. फिर आपने ये देखा होगा कि पूजा में अक्सर नारियल और केला, यही 2 फ्रूट सबसे ज़्यादा भगवान को ऑफर किए जाते हैं, भगवान के सामने चढ़ाए जाते हैं, या मैं कहूँ कि प्रसाद के रूप में मंदिरों से ग्रहण किए जाते हैं. कोकोनट एंड बनाना आर द ओनली 2 फ्रूट्स इन द वर्ल्ड विच आर कंसीडर्ड टू बी सैक्रेड फ्रूट्स. All other fruits are tainted fruits, means partially eaten माना जाता है बाकी सारे fruits को. For example, apple tree grows from the seed of another eaten fruit. जब हम उस fruit को खा लेते हैं, वो consume हो जाता है, उसमें से बीज निकलता है, फिर apple का tree grow किया जाता है. Exactly same happens with the mango even. That is why such fruits are treated as tainted. इनको जूठा माना जाता है. But in case of coconut
and banana, the shell or the leaves are not used for anything. To grow a coconut tree, you will have to sow the entire coconut itself. आपको नारियल उगाने के लिए पूरा का पूरा नारियल जमीन के अंदर दबाना पड़ेगा. इसी तरीके से banana tree can grow with its sapling only. This is the reason why coconut and banana has an important place in all religious activities. And our ancestors had found this reality long ago. And they had made it as a system which is still followed by us religiously. This shows the sense of self-sustenance कि हमने उन fruits को choose किया जो self-sustained. Coming on to the langar pratha, let us discuss its real meaning. Langar is the food served or given to all, regardless of caste or religion, as a gesture of equality. Concept of charity and providing cooked meal or uncooked raw material to ascetics and wandering yogis has been known in Eastern cultures for over 2000 years. However, in spite of institutional support from several kings, emperors of Delhi Sultanate up to Mughal Empire even, it couldn't be institutionalized into sustainable community kitchen but continued as volunteer-run free food opportunities. Such distribution of free food was often limited to specific Hindu festivals or events at dargahs of Sufi saints. Exclusion of people based on caste and religion further limited their outreach, which makes it questionable if they can be truly called community kitchens. However, community kitchens started by the Sikh gurus was universal and accepting of people from all the faiths, from all the backgrounds, a tradition which has continued to till day. This type of food served and the method of cooking employed further helped make Sikh langar universally accepted by all faiths and castes. लंगर का बेसिक मीनिंग था कि कास्ट और रिलीजन के रिगार्डलेस एक जेस्चर ऑफ इक्वालिटी जहां पर सब एक बराबर हैं और सबको एक समान मिले. तो 2000 साल पहले से ये प्रथा चली आ रही थी, लेकिन कास्टिज्म आ गया इसके बीच में, रिलीजन को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया तो लिमिटेड आउटरीच हुआ. लेकिन इसको पॉपुलैरिटी मिली जब सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने इसको एक लंगर प्रथा के नाम से पॉपुलर कर दिया. And it is still ongoing till date. Let's have few conclusions. The present generation is not as keen on visiting temples as their ancestors. With their busy, comfortable lives, they don't get time to visit temples since God is everywhere and prayers can be done at home. What is the necessity to visit temples and how it is going to benefit us? Would you like to know again? Let us recapitulate. You will feel the positive vibes. In most of religious places, we find that gold statues placed on copper plate, which could be the possible reason. It is widely believed that these copper plates absorb Earth's magnetic waves and radiates it to the surroundings. Thus, a person regularly visiting a temple and walking clockwise around the main idol receives the beamed magnetic waves. This is a very slow process and a regular visitor will eventually start to feel the positive vibes. जब आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाते हैं तो वहाँ की इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स को कैप्चर करने के लिए आपको वहाँ उस प्लेस को रेगुलरली विजिट करना होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज अ बैड कंडक्टर. आप चाहे उस फर्श को कितना भी कंडक्टिंग बना लें, हम लोग बैड रिसेप्टर्स हैं, तो हम लोगों को उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए बार बार वहाँ पर जाना पड़ेगा. You will concentrate your thoughts at such places. It becomes easy for a devotee to concentrate on worshipping God in a temple where hundreds of devotees come for the same purpose. The environment of the temple produces a psychological effect which helps in improving the concentration and peace of mind. Continuous repetition of mantras charges the whole energy and the whole space is kept alive. So if you go and stand in front of an energized murti, in front of energy space in the temple and create a wish, your whole body and mind will be tuned to that thought.
नेचुरली इट विल बिकम रियलिटी इन योर लाइफ. हम लोगों को लगता है कि जब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाते हैं, वहां जाकर जो मांगते हैं वो पूरा हो जाता है. एक्चुअली वहां पर हमारे थॉट्स कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं. एक बुक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. आप उस बुक को पढ़िएगा जरूर. वहां पर उन्होंने बात की कि जब हम सारी एनर्जी को एक जगह झोंक देते हैं तो डेफिनेटली वो काम हो जाता है. एक मूवी में डायलॉग है शाहरुख खान का कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है. दैट इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर थॉट्स. और ऐसी शांत जगह पर जाकर हमारे थॉट्स कॉन्सेंट्रेट होते हैं, हमारी एनर्जी चैनलाइज्ड होती है. दैट इज वाई हमें लगता है कि हमारी विशेस पूरी हो रही हैं. Appreciate the architecture and know its history. The entire art of building temples and churches is not a mere art, it is a science. Every single facet of it, from the size of idols to the direction and the sanctum. Yes, these architectures have highly developed science. We have to cultivate the fondness for architectural excellence in the minds of our children. Each ancient temple is unique and has its own history. It's important to know its history while visiting the temple, and it's equally important to tell our children about these temples' history so that future generation has more bond affinity towards our amazing ancient tradition and culture. The stories and legends of these religious places also impart moral and ethical values in our children's minds. And इस चीज की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमारी 5 सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगी. ह्यूमन साइज, हियरिंग, टच, स्मेल किस किस तरीके से एक्टिवेट होंगी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन वेरी डिटेल. And when you go to such religious places, you will feel the energy transformation within you. When people go to religious place, the Deepardhana, and when the doors open up, positive energy gushes out onto the person who are there. And such places radiate energy. A Japanese scientist, Dr. Emoto, has carried out research on the power of thoughts and has proved that thoughts have a tangible effect on material objects. Dr. Emoto took samples of water from the same source, put it in different containers and exposed it to different influences. To one sample he spoke positive words of love, gratitude, recited Buddhist chants. Over another spoke negative words of anger, hatred, war. Then he froze the water so that it could be photographed. It is in crystalline form. Beautiful clear crystals like diamonds formed in the samples exposed to positive energy. With the samples exposed to negative energies, the crystal structures appeared dark, misshapen, ghost-like. Over 300 experiments conducted by Emoto repeatedly proved the effect of words and thoughts on water that are recorded in his book Messages from Water. When simple water can respond to our thoughts, our vibrations, why not a structure? Why not a temple? Why not a gurudwara? Why not a church? Why not a mosque? Why not a stone? The mantras, when chanted continuously, the very air vibrates with the pure vibrations. Our ancestors have installed the energy in earth elements in the stone. These are idols or murtis, and thus energy lost in a day's work is regained through a temple visit and one is refreshed completely. जैसा कि मैंने अभी बताया कि डॉक्टर इमोटो ने एक्सपेरिमेंट्स किए. उन्होंने वाटर सैंपल्स लिए. एक वाटर सैंपल के साथ वो लव, अफेक्शन, ग्रैटिट्यूड और मंत्रास जो बुद्धिस्ट चैंट्स थे उनकी रेसिटेशन करते रहे, और दूसरे में नेगेटिविटी और गुस्सा और ज़ील, अपनी जेलस वो शो करते रहे. एंड ही रियली फाउंड द डिफरेंस, ग्रेट डिफरेंस, कि जो स्ट्रक्चर्स डायमंड लाइक बनी पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए क्रिस्टल्स में और दूसरी वाली खराब बनी. इट मीन्स नेचर की हर चीज पे हमारे रिएक्शंस का इम्पैक्ट होता है. जब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में एंटर करते हैं, वहां पर हर टाइम मंत्रास, गुरबानी, हर टाइम्स जो चैंट्स हैं वो रिसाइट किए जाते हैं. मतलब एवरी टाइम पॉजिटिव एनर्जी सरमाउंटेड ओवर देयर, और वो पॉजिटिव एनर्जी हम ग्रैस्प करते हैं तो डेफिनेटली नेगेटिविटी इज रिमूव फ्रॉम आवर माइंड. And very thanks
I hope you must not have been bored and must have understood the real science behind visiting such religious places. Now you must have understood the significance of visiting these religious places. Thank you so much.